Hi guys and welcome to Kasol. तो चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं कसौल। अगर आपको नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए तो go back and watch my previous episode. I will link it for you right here and then come back. A hippie paradise and one of the most vibrant towns in all of Himachal in Parvati Valley. But it was not always like this. Yes, you heard it right. In the early 90s, it was just a quiet hamlet and was actually a bus stop with hardly any population. Having said that, it is still a nature's paradise. So we've just reached Kasol. हमने एकदम मार्केट के पास ये होटल बुक करा. It was, I think it cost us about 6,000 for 2 nights. इसका नाम है Offlimit Stays. Pretty popular and थोड़ा luxury में आता है ये. And we were staying here for 2 days. हमने सोचा थोड़ा luxury afford कर सकते हैं हम. So why not? यहाँ पे आपको हर तरीके के स्टेज मिल जाएंगे. वैसे बजट में आपको 500 से लेकर के 1500 तक के रूम्स मिल जाएंगे. बट वी चोज़ दिस. इस रो में और भी सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप कमरे ले सकते हैं. ये पूरा मार्केट का एरिया है पीछे. यहाँ पे बहुत सारे होटल्स होम स्टेज आपको मिल जाएंगे. इनफैक्ट अगर आप और अंदर गांव में जाएंगे आपको और सस्ता रुकने की जगह मिल जाएगी. तो वेल दैट्स दैट. और अभी हम एक कैफ़े में जाने वाले हैं. Now this takes us to the places and things that you must do when you are in Kasol. So we are out and about now. We are going to the cafe. हमारे होटल का ही एक कैफ़े है नीचे रिवर के पास. तो वहाँ जा रहे हैं हम. Offlimits Cafe. Let's go. Only 50 meters away from our stay was this cafe. Number 1, the Offlimit Cafes. One of the few hemp ecosystem cafes overlooking the Parvati River is one of the must-visit places. With the perfect location, it serves you equally good food. Trust me, it became a go-to spot whenever I was in Kasol. नंबर 2, कसौल की गलियाँ. Kasol is not just a city but a vibe. Do you know what I mean by that? Watch this. आप बोलोगे पर नेहा मार्केट ही तो है, यहाँ पे वही चीज़ मिलेंगी जो हमारे मार्केट में मिलती है. Well, not exactly. A lot of shops here support the local artists and artisans. So you will get a lot of handmade good products that
otherwise will be sold on a very high price. ब्रदर्स ट्रेडर्स करके सही सामान दिया है भैया ने, एकदम सस्ता और बजट में। ये भैया हैं। Number 3, the must try food in Kasol. You will find small cozy German bakeries at every nook and corner here in Kasol, and no matter where you go you will get amazing baked goods. I mean, I fell in love with the cinnamon rolls here. Another thing that you cannot miss in Kasol is the trout fish. Yes, the trout fish is locally caught here from the Parvati river और आपको सबसे fresh fish मिलेगी खाने के लिए यहाँ पे। और in fact all of the cafes here serve trout fish baked, grilled, any way you like. I will tell you more about the cafes in details और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं हमारे next episode में, तो stay tuned for that. Number 4, various trekking options in and around Kasol. जैसे आप बहुत लोग जानते हो कि यहाँ से द फेमस ट्रैक जाता है खीर गंगा का, यहाँ से और भी बहुत सारे ट्रैकिंग ऑप्शंस हैं, जैसे भुनभुनी का। आप विलेज एक्सप्लोरेशंस के लिए जा सकते हैं, जैसे खलगा, पुलगा और छलल, जो हमने अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक्सटेंसिवली कवर करा है। सो चलिए अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड वेयर वी विल बी कवरिंग द मोस्ट पॉपुलर कैफेज इन कसौल एंड विल बी गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग द छलल विलेज। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। प्रेस दैट बेल आइकॉन so that you know when I post my next video. Do follow me on Instagram. My handle is girl_in the midst. And I'll see you next week. Keep traveling. Ciao.